इंडिया के बारे में जो 10 बड़े झूठ बोले जाते हैं ना कि यार इंडिया में तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा है, इंडिया ये चाहता है, इंडिया वो चाहता है, पढ़े लिखे नहीं होते। फिर इंडियन सारी आईटी एक्सपर्ट है। नो वे। फिर इंडियन क्या सारी शादियां अरेंज मैरिज करते हैं? ऑब्वियसली नॉट। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, आज हम इंडिया के बारे में जो 10 बड़े झूठ बोले जाते हैं ना कि यार इंडिया में तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा है, इंडिया ये चाहता है, इंडिया वो चाहता है, मतलब कि 10 ऐसे बड़े झूठ हैं खदीजा। आज हम उनको देखेंगे कि वो क्यों बोले जाते हैं और ऐसे बना दिए हैं किसी ने झूठ, तो आज हम उनके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। आपने एंड तक हम इन सब 10 झूठ में से देखना है क्या इनमें से कोई सच भी है कि ऐसे ही झूठ बने हुए हैं। तो आपने ना बस हमारे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस तो करें। चलते हैं और देखते हैं। Second largest population in the world next to China, and not to mention even the amount of Indians that have immigrated to other countries. And with a lot of people comes a lot of different stereotypes, misconceptions, Exactly. and lies. Welcome back to another episode of FTD Facts. My name is Leroy Kenton, and this is the latest episode in our Biggest Lies series. We've done them about several other countries before, and now I found 10 for India. So let's just jump into everything. So the lie at number 10 is Indian is a language. Oh my God! Indian तो कोई Like, language you ही नहीं। speak Indian? Speak Indian? No. Indian is not a language. It's a nationality. Okay. बिल्कुल। And there are hundreds of languages actually तो spoken पाकिस्तानी throughout ज़बान बोल India. रहा है, उर्दू And बोल रहा है। language, English and Hindi are the most widely spoken Yeah, languages. Hindi है वही ना? Actually, that leads me to the next lie. Indians speak Hindu? Okay, guys. A lot of people get confused with the religion of Hindu and the language. Indians speak of Hindi. Hindi. So yes, Hindu is the religion, And Hindi is the language. And Indian Okay, is you'll definitely be nationality. surprised that many Indians don't even speak Hindi anyways. They Yes. speak languages of the Dravidian origin. And as a matter of fact, Hindi isn't even taught in many of the schools in India. Also, every region has its own set of languages, and Hindi is Exactly. spoken in its purest form in the northern sections of India. Now, the next lie is Indians are poor, but they're happy. So I guess this one comes from watching different movies and TV shows. India poor तो नहीं है। Slumdog Millionaire, India तो बड़ा all अमीर है। that. There are slums in India. However, the Indian population is divided into 3 basic categories. Like there's the poor, there's the middle class, and then And there's the the rich. rich. And even though there's a lot of poverty in the country, the biggest economic group is the middle class. They live great lifestyles and have amazing homes as well. Also, some of the richest people in the world live in India. So to assume that it's just a poor country, but they're happy anyways, being poor, that is just a straight up lie. The next one is Indians are uneducated. This is probably one इंडियन तो of बहुत the पढ़े लिखे हैं, most हमें तो नहीं कर बैठे हुए हैं वहाँ stereotypes गूगल because में। Indians are highly educated. They don't Exactly. just work at convenience stores, Indian educational system is a very important part to the country. Even poor families from different villages strive to make their children have the best education. There's a lot of doctors and engineers that come out of India, as well as people with MBAs and PhDs, all sorts of major qualifications, and business people. The education system in India is very competitive and challenging. I've heard that it's even more challenging than some of the schools over here in the West. So yeah, anyways, bottom line is a lot of smart people coming out of India. Now this other one kind of ties into the previous lie at number 7, but all Indians are IT experts. No. Okay, I'm not gonna lie, I've gotten those IT calls from India that are just straight up scams. But yeah, this is another big lie. Indians have showcased a lot of different talents in various fields, Exactly. including the information technology field, of सारे course. नहीं हैं IT But yeah, there's a expert। lot of popular personalities. सारे कैसे हो सकते हैं? Chopra, she's an actress and a singer. Prime Minister Narendra Modi, he's into politics and he's the current Prime Minister of India. Dhoni, who's big into Cricketer. sports, he's a major cricket player. And Amartya Sen is known in the field of literature. So yeah, there's a whole sea of talents that the people of Exactly, India have. exactly. Halfway in at number 5, all marriages are arranged झूठ।
qualified Indian Love marriage भी parents. होती है। And in all honesty, if you go to India and you speak to the families there, they're actually quite liberal in who their children marry. Even as the majority of marriages in India are arranged, there's definitely a huge rise in love marriages. You know, people just get married because they really love each other, have nothing to do with the parents. And also in India, marriages aren't really forced upon the kids these days, although yes, it is a big dream and wish and a hope and prayer for a lot of Indian parents, like many other countries, for their kids to get married. It's a big lie to say that they're all forced. Now, I actually heard this one this week. Indians are vegetarians because they worship No, cows. खाते हैं So chicken. they do have a mix of vegetarians, सब नहीं खाते। non-vegetarians, Some. pescatarians, all sorts of tarians. I mean, like Indians, they eat buttered chicken and kebabs with beef, and they do have a wide variety of vegetarian dishes as well as non-vegetarian dishes. Yes. Really, there's a whole buffet in the country of India. There's also belief that Indians worship millions of gods, 330 million gods Yeah, to maybe be so, exact. yeah. Now, these gods and goddesses have multiple heads and arms and all of that. So, like, what kind of thing is going on here in the religion of Hinduism, which is the largest religion in India? But not many people know that while Hindus do believe that God is in everything, it's all a manifestation of one source and creator of reality, which they refer to as Brahman. So, therefore, every living and non-living thing is viewed as sacred. Each of the gods and goddesses in Hinduism also represent individual aspects of Brahman. So, for example, Ganesh is worshipped for good fortune and removing obstacles. And Hinduism doesn't actually prescribe any sort of set path for people. Rather, the followers focus on building their own genuine connection with God. And they can pick and choose whichever deity they feel to worship, which all represent an aspect of the one true God anyways. Now, the second lie is Indians all do yoga and say नहीं, namaste. Indian सारे थोड़ी So योगा there's करते been a हैं। huge growth in the new age spirituality, especially over here in the West, and it's brought a lot of different views हम of नमस्ते different तो थोड़ी भी कहते हैं। spirituality from India. बाद में है, The yoga जो Wadi पढ़े लिखे practice in बच्चों the को West नमस्ते is के लिए completely हाय भी different from the बोलते हैं centuries old tradition that is practiced in India. Also, not everyone in India incorporates yoga into their daily lives, and while namaste is a very integral part in the Indian culture, it's no longer a universal greeting in modern Indian society. Normally, you hear that type of greeting used in formal gatherings or when people are interacting with elders. It's also most common where they speak Hindi in its truest form, and you'll find that in North India. And the final thing is misconception, stereotype, and lie about India is that India has no toilets. I hear this one all the time, like टॉयलेट seriously. एक प्रेम And I कथा see मूवी भी that आई in थी the comment उसका भी section. था You कि guys are टॉयलेट like नहीं है terrible sometimes towards India. चंद इलाकों में नहीं है, बाकी तो हर जगह ही होते हैं। But yes, you'll find that शौचालय। there's many squatter toilets in India, and also many places don't have toilets. However, the government of India claims मैंने that नहीं the सुना ये वाला situation झूठ has been कभी। improving rapidly since 2015, and this is mainly due to the Swachh Bharat झूठा है, Abhiyan झूठा है, campaign. And according to the latest numbers, only 5% of the total population of Right, India yeah. have no access to toilets at all, and that is far from all Indians having no toilets. Okay, guys, so those were the 10 biggest misconceptions, stereotypes, and just straight up lies about India and Indians. Let me know down below in the comments section what other lies do you know about. And also leave your comments about anything that I mentioned in this episode. I look forward to seeing them join on the conversation down below. Alright guys, so if you enjoyed this episode, here's another one that I highly recommend for you. Just tap the annotation. हाँ जी खदीजा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना मैं पहले आपको बताता हूँ, आपने जो चीज़ें आपको झूठ लगती हैं आपने उनके आगे झूठ बोलते जाना है कि ये झूठ है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडियन इज़ अ लैंग्वेज। नो उसके बाद अगला झूठ, क्या इंडियन हिंदू स्पीक करते हैं? नो उसके बाद क्या इंडियन गरीब है और खुश नहीं है? नो फिर उसके बाद इंडियन पढ़े लिखे नहीं होते। नो डेटॉल फिर इंडियन सारी आईटी एक्सपर्ट है। नो वे फिर इंडियन क्या सारी शादियां अरेंज मैरिज करते हैं? ऑब्वियसली नॉट क्या इंडियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन ही फूड पकता है, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं होता? नो 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 फिर क्या इंडियन करोड़ों किस्म के खुदाओं की पूजा करते हैं? नहीं। फिर उसके बाद मुझे बताओ, क्या सारे इंडियन जो है वो फिट हैं, योगा करते हैं, नमस्ते करते हैं? नहीं। फिर क्या मुझे बता दो, क्या इंडिया के अंदर बाथरूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है? दिस इज इम्पॉसिबल तो ये वाकई 10 झूठ ऐसे हैं कि जो झूठ
हमने सुन रखे हैं, लेकिन आज ना इस वीडियो से तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये झूठ कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं। एग्जैक्टली, स्टीरियोटाइप और मिसअंडरस्टैंडिंग ना बहुत गलत इमेज भी करती हैं, और एक तो बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिठू बन जाता है कभी कभी आप, और कभी कभी बिल्कुल। जैसे अब इन्होंने जो चीज़ें दिखाई हुई हैं, ऑब्वियसली सब एजुकेटेड नहीं है इंडिया में भी, एक तबका होगा जो अभी नहीं इतना पढ़ा लिखा होगा। और देखो जबकि इंडिया में तो वैरायटी ऑफ टैलेंट है, क्लासिकल डांस, ब्रेक डांस, उसके बाद आप एक्ट्रेसेस को देख लो, इनके बॉलीवुड देख लो, आईटी एक्सपर्ट तो बिल्कुल एक डिफरेंट उनकी लगती है साइड, जिसको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। क्रिकेट में देख लो, मैं धोनी को देख लो, हर जगह ही ना वो आ गए हैं ये बाकी 10 झूठ थे। और यकीनन आपको आज की वीडियो से ये तो पता लग गया होगा कि ये झूठ क्या वजह इसमें है। से आप बताएं कि 10 झूठ में से कोई ऐसा झूठ जो आपने पहले सुना हो। मैंने इसमें पहले ये सुना है कि इंडियन जितने भी हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते, और जो है वो मतलब सारे वेजिटेरियन, ये झूठ मैंने सुन रखा था। मैंने ये बात सुना था कि वो मिलियंस ऑफ गॉड्स की पूजा करते हैं। हाँ, तो इसके अलावा टॉयलेट वाला तो मैंने कभी सुना भी नहीं, और मैं तो देख के हैरान। नहीं, आइडियाज है लेकिन ये इतना भी नहीं, अब तो मॉडर्न हो चुका है इंडिया, इतना डेवलप हो चुका है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, ये तो गलत बात है। तो मतलब इवन दो तो आपने जी, हमने अपने एनालिसिस से ये बताने की कोशिश की कि यार हमारे नज़दीक तो ये 10 झूठ जो हैं वो 10 झूठ हैं, और ये इंडिया के बारे में बोले जाते हैं। आप बताएं जी, आप कौन से सुनते हैं जी कि इंडिया के वाले से आपको कौन से 10 ऐसे झूठों का सामना करना पड़ा है? लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, जब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।